बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू बी माय गेस्ट। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, हर सीज़न में आपकी मुलाकात करवाते हैं कम्युनिटी के ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन इस दफ़ा आज आप डिफरेंट सेट देखेंगे और हमारे कुछ ऐसे गेस्ट जो कि तीसरी दफ़ा हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। उसकी रीज़न है, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत ट्रॉफ़ी। ये क्या है? ये ट्रॉफ़ी GT20 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। ये किन के पास है, कैसे ये ट्रॉफ़ी यहाँ तक पहुँची, इस बारे में बात करेंगे। और आपको पता है मैं किन का नाम लेने जा रहा हूँ। जी हाँ, टोरंटो नेशनल लुकमान एंड तौसीफ मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। थैंक यू। क्या हाल है तौसीफ? खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं? लुकमान, आप तो 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तौसीफ से स्टार्ट करते हैं। तौसीफ भाई, नर्वस शर्वस एनीथिंग? नथिंग, पक्की बात है? आफ्टर द विन। आफ्टर द विन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि 4 सीजन्स और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा टूर्नामेंट, मैंने देखा कैसे आप लोगों ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू गाइस प्लेड इट आउट एंड फाइनली यू हैव दिस ट्रॉफी। सो मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम मी, फ्रॉम द ARY टीम। थैंक यू वेरी मच। तो तौसीफ, थोड़ा सा चलते हैं कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, राइट, एंड आई वाज विद यू गाइस एंड आई वाज लुकिंग एट दैट कॉन्फिडेंस, दिस मोटिवेशन फ्रॉम द डे वन कि यार इस साल हमने जीतना है और इस साल हमें ट्रॉफी लेके आनी है। तो जब ट्रॉफी आ गई, अब आपकी बात करते हैं, हाउ डू यू गाइस फील? आई मीन इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अभी थोड़ा सा यकीन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहा है। देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेंट इन, अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन दैट वेंट थ्रू इट, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, स्पेशली बोथ ऑफ अस पुट अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट विद द कोचेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो आई रिमेंबर लुकमान टॉकिंग टू यू कि जब हमने डिस्कस किया स्टार्ट होने से पहले सीजन कि यार टीम में 2-3 प्लेयर्स हमारे जो मेन मार्की प्लेयर्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना गो, बट यू हैव बीन कीप टेलिंग मी वी हैव अ वेरी बैलेंस्ड टीम स्टिल। राइट, सो वेयर डिड यू गेट दिस फेथ फ्रॉम, मैन? अच्छा, सो लुक, हमारा ये दूसरा साल है यू नो रनिंग दिस टोरंटो नेशनल फ्रेंचाइज। मैं काफ़ी ओनर को कॉल करता रहता हूँ, PSL में मैं जानता हूँ, एंड आउटसाइड इन अ डिफरेंट लीग एज वेल। वो सारे कहते हैं कि हर टीम में ऐसे फेज़ आते हैं, इट्स whoever wins जो इस फेज़ में रिकवरी कैसे करते हैं। सो रिकवरी रिप्लेसिंग शहीन, देयर इज वेरी लिमिटेड प्लेयर्स दैट यू कैन रिप्लेस हिम विद। तो हमारा वो जेसन ब्रांडॉफ, ही वाज अ गुड यू नो लाइक टू लाइक रिकवरी। ऑफ कोर्स वो स्किल लेवल तो नहीं था, लेकिन ही परफॉर्म्ड वेरी वेल वेरी वेल। आई थिंक ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, आई बिलीव, और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर। सो वो हमने 1-2 और प्लेयर भी ड्रॉप हुए तो हमने रिकवरी बड़ी अच्छी की। उसकी वजह से आई थिंक हमारी टीम जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रही। जो हमारा कॉम्बिनेशन था वो कंटिन्यू रहा उस हिसाब से। मोर देन दैट, मैंने ये देखा कि आप लोगों ने अपनी टीम पे इन्वेस्टमेंट बहुत की है। यू आर द ओनली टीम जिसने इतना बड़ा गाला भी अरेंज किया, एंड इन योर इंटरव्यू यू सेड आई एम सेटिंग एन एग्जांपल फॉर अदर टीम owners as well, right? जी। This gives a big boost and big motivation to the players as well. Right. ठीक है, तो do you think this all adds up? Because I see a lot of passion in your team, the way they were gelling around. No, 100%। मैंने ये पहले भी मेंशन किया था कि GTA is, मैंने लास्ट टाइम actually I had to do a fact check. Last year मैंने कहा था second biggest is actually the biggest South Asian market in North America. कोई भी सिटी comes nowhere close to GTA. So ये एक ऐसी सिटी है जो पूरा स्टेडियम फिल अप कर सकती है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। That's one. Second, I mentioned कि जितनी हम अवेयरनेस नहीं है अभी क्रिकेट की कि इस लेवल पे क्रिकेट हो रही है, जो बच्चे यहाँ पर हैं वो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, इन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। सो दैट्स टोरंटो नेशनल्स गोल। मेयर भी आई हुई थी मैच पे, they want to support, they have a lot of budget for youth growth and development program, so हम उसको leverage करके we're trying to set up a system for kids to come play and then play the sports they love. Touseef, how do you see yourself, Toronto Nationals, different than other team? I think Luqman just touched up on something. We're starting an academy. We want to give back to the community. We're starting a grassroots program जो कि यहाँ के local players को give an opportunity to grow, show their skill set and perform here and hopefully get in different leagues too. We want to give everybody a dream. This is where we think we're a little bit different. We're very much engaged in the community. So no, that's good. अच्छा, आप लोगों ने tryouts भी कराए थे, मुझे याद पड़ता है, right? So were you able to pick any player from there? Yeah. So I mean, again, काफ़ी चीज़ें जो हैं within league that needs to be improved.
we get very limited number of players that we're allowed to play directly. We get pre-made list from the league or Cricket Canada that we have to pick it from. Then we ask them that what about our investment in the youth outside of that list. For example, agar hum tryouts hold kar rahe hain, we want to pick some players from that. So we actually picked a couple of players from the list, so that was good. मैं चाहता हूँ कि इस मोमेंट को आज हम अच्छे से एंजॉय करें बिकॉज वी हैव द ट्रॉफी एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द फाइनल्स एंड एलिमिनेटर्स ऑफ कोर्स थ्रोस पे टच बेस करना चाहता हूँ. आई रिमेंबर यू बीइंग पैरानॉइड in the last, I think it was versus Mississauga, right? जी. Or you were just moving here and there. जी. And I was looking at you, and we were all asking you what's happening. Right. Yeah. Right. A day before, Yes. a night before that. Yes. कि मैं देख रहा हूँ कि you're on the headlines, putting Yes. covering on or bringing covering on. Yes. You want to just give me some highlights? So I mean, it shouldn't be a controversial story, but it became a controversial story. See, at the end of the day, for us, both of us, cricket is a passion, and we want to make sure that cricket is happening. Everybody comes and watches and enjoys the cricket, and at the same time, जो आप बात कर रहे हैं वो क्वार्टर फाइनल था. Stage 1 eliminator against Mississauga. Heavy rain was expected at that time. As per my knowledge, at that time हमारे पास पूरी ground cover करने के लिए covers नहीं थे. So I requested league that they were also trying to find it, but they were not able to find it. So I told them that I can help them find it, and then we can cover the entire ground to make sure that we have game tomorrow. So I assisted the league. So question. Yes. So the league didn't have the covering for the ground? No, they did have covering, but they didn't have covering to cover the entire ground. Acha. Right? Right. I mean, this is pretty normal. You see PSL and IPL, there are some grounds, they don't have covers to cover the entire ground. Typically, you cover the pitch and the run-up. But then we were expecting heavy rain. So we wanted to make sure that, at least there's a game. इतने लोग आ रहे हैं. So you tried, did Mississauga team tried as well कि game हो एक दिन पहले? So, I mean, I don't know if they tried or not. I don't know about that. Lekin we tried because we wanted to have that game. Maybe we wanted to put in the effort that if there was no game, we might have been eliminated. Right? So that's the fear. That's bring you this that's trophy right. today. That's right. That's right. So that's why we tried, and it worked out. So what exactly happened? I just want to go directly to the questions. Yes. मैं कहा sugar coating से हटा लेते हैं ना थोड़ा सा चीज़ों को. तो on that eliminator day, the referee called for a one super over. Yes. What happened? Super over क्यों नहीं हुआ? So I mean, the referee and the technical committee and the ground staff, they assess situation कि ground available है कि नहीं. So they made a call. There was a limited time left. काफी rain हुई थी. Ground wasn't prepared. So एक short time window रह गई थी और उस window के अंदर सिर्फ आप super over ही कर सकते हैं. सही है. And tournament से पहले या दौरान ये rule share कर दिए गए थे कि हम if there's no time, we will have minimum one super over for sure. So वो luckily या unluckily for Mississauga वो ground उस short span में ready हो गया. Umpires were comfortable. Technical committee was comfortable to hold that super over. जब वो super over की उन्होंने announcement की, Mississauga was not in favor of playing that super over or their captain. Umpire ने task का time announce कर दिया. हमारे captain चले गए. उनके captain Mississauga captain Shakul Hassan did not show up for whatever reason. This has nothing to do with us, Mississauga or the league. This is strictly people assigned by ICC who make that call. So you call it a forfeit or eliminated? Forfeit. So yeah, when one team wants to play and the conditions are good to play by the management. So technically they forfeit themselves, right? They forfeit themselves. Okay, and that's. And I'll just add to this. Sorry, they were made aware that if they don't come for toss, they will be forfeiting. Forfeited. Okay. Yeah. And उसके बाद फिर Toronto Nationals got the bright chance and just come toward the final, right? Yes. Final की बात करेंगे. Again, looks like rain आ रही है. Right, and जब मैच स्टार्ट होने लगा तो उससे पहले भी conditions were like wet, is gonna be wet because we also knew that कि ground का जो itself जो उसका weeping system है, ठीक है, drainage system है, वो भी काफ़ी hassle में रहा, काफ़ी problem में रहा है. So covering available थी, match होना था. Again, the match was keep postponing from
12, it starts around 2 o'clock. It's roughly that. 2 घंटे मैच स्टार्ट होता है एंड आई सी के द अदर टीम दे कीप फॉलिंग विकेट्स राइट फीलिंग आ रही है कि मैच जीतने लगे हैं द क्राउड्स आर चीयरिंग एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट राइट लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अगर हम फाइनल की बात भी करें तो हमने देखा कि लो स्कोरिंग गेम ही चल रही है 120 140 160 इज द मैक्सिमम आई बिलीव जो कि है और लास्ट ईयर उससे पहले भी हमने हमेशा बात की कि पिच इश्यूज हैं एंड द सेम कंडीशंस वी वर आई मीन टोरंटो नेशनल वर फेसिंग के इन द फर्स्ट 2 overs वी गॉट 2 wickets fall एंड वो कोई डरा गया था कि भाई इट्स द विकेट एंड इट्स गोइंग टू बी अ टाइट मैच right सो हाउ डू यू टच बेस दिस पिच थिंग No, so I think we didn't have the best pitches, to be honest. I don't want to sugarcoat on that. There's a lot of improvement that's required. And then we are, as all the franchise owners, are working with the league to make sure. See, the whole purpose of everybody coming to watch the game at the ground or watch online, they want some sort of entertainment. छक्के जा रहे हैं, boundaries जा रही हैं, लोग enjoy कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला चल रहा है. That's why they have come to pay money for. So this is one thing that we're very closely looking at for next year. जो pitches हैं उनकी quality high standard हो. So yes, the pitches were not good this year. यार इतना जब इन कंडीशन में जो आप खेल रहे होते हैं यार आपको पता है कि यार हमें लीग से कितनी सपोर्ट मिल रही है, लोगों से कितनी सपोर्ट मिल रही है, मार्केटिंग से कितनी सपोर्ट मिल रही है एंड पूरी की पूरी लीग अनाउंस हो रही है 2 महीना पहले एंड एवरीवन इज वर्किंग राइट. ये कोई एक दिन का टूर्नामेंट नहीं है कि आपने किया एंड आउट. Yes. Like for whole 30 days you guys are fully involved. Yes. ये कभी सोच नहीं है कि यार इस दफा नहीं जीते तो मैं आउट मैं नहीं हूँ आगे. See, good question. I think you have to ask yourself, what are you in this league for? For me, it's passion, right? Yes, there is a certain portion you have limited budget. For me, it's more of a passion. I like this game. I want to participate. I want to contribute. And at the same time, ये नहीं है कि we just want to have a game. This is an international level tournament. We always have to push the league owners that we have to go to the next level. So this is where you will see quite a bit of significant improvement next year, from the management, from the tournament, from the pitches, all the way up. मैच के दौरान मैंने पता किया कि तौसीफ भाई आप आज लेट आए थे, मेरा अपना मैच था सुबह में. हाँ जी, नहीं I can see the passion. Yeah, that's what derives us, like a lot of passion. Or we play in the local leagues. I think we played together for like over 20 years now. वहीं से friendship हुई, वहीं से business, वहीं से team, everything is very aligned with us. So I think that passion probably trickles down towards the team as well. That's a story. That's a story. Yeah. We'll take a short break और हम फिर बात करेंगे टीम के बारे में, players के बारे में, and the GT20 itself, and how do you see the next year. ब्रेक लें, कौन लेगा? बहुत हो गया भाई लुकमान भाई, 2-3 दफा ब्रेक दिलवा दिया आपसे. आपको बनाते हैं होस्ट. ठीक है. लेंगे ब्रेक? चलें, let's ये go. कैमरा है आपका. Assalamualaikum guys, let's go into a break. We'll take a short break and we'll be back shortly. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट. जी हाँ, आज हमारे साथ टोरंटो नेशनल्स और ये इतना खूबसूरत चैंपियंस कप यहाँ मौजूद है. बात हो रही है तौसीफ से और लुकमान से, तो आगे लेके जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ आसिफ जमाल साहब मौजूद हैं, उनको भी कॉल पे लेते हैं. इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ARY और बीइंग अ पार्ट ऑफ टोरंटो नेशनल्स. जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल चाल है, एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट. Thank you, Ahmed. I'll start with a big congratulations to Toronto National. Luqman and Touseef, great job. और मैं ये समझता हूँ कि being a team owner, it's not easy as well. क्योंकि सारी responsibility, बड़ा pressure होता है, और ये मुझे first hand experience है. I've seen it just by being with सलमान इकबाल साहब. जब हमारे कराची किंग्स के मैचेस होते हैं, as you know, कराची किंग्स is owned by ARY. बहुत pressure होता है, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टीम के मैटर्स को ऑफ कोर्स जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है बहुत क्रिटिकली और करीब से देख रहा होता है, और जो बाहर से बैठे हुए लोग देख रहे होते हैं या जो साथ होते हैं, बिलीव मी, वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि व्हाट इट टेक्स. सो मैं समझता हूँ कि लुकमान एंड तौसीफ, क्या प्रेशर होगा आपका. अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ. ऑब्वियसली टोरंटो नेशनल के साथ हमारा एज एन ARY कैसे हम टीम अप हुए और कैसे हम जुड़े. सिंपल फैक्टर था, लास्ट ईयर आई वाज जस्ट सो हैपन टू बी हियर, और ये GT20
का पर्सपेक्टिव बड़ा हाइप अप हुआ था, तो मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आई शुड गो विजिट एंड मीट अप. सो वी मेट क्वाइट अ फ्यू ऑफ टीम ओनर्स एक्चुअली. बट उनमें मुझे जो थोड़ा सा स्कोप वाइज ऐसा लगा कि ये क्रिकेट का पैशन सबको ही है, जो भी टीम ओनर्स हैं एंड फ्रेंचाइजीज हैं ऑब्वियसली. बट लुकमान के साथ आई गॉट कनेक्टेड. मुझे ऐसा लगा कि लुकमान के साथ हम टीम अप करेंगे, और लुकमान के अंदर जो पैशन है, स्पार्क दैट आई हैव सीन, ऑब्वियसली एडिंग तौसीफ, it was different. So we team up. Being a media partners and brand partners, we did what we did, and I feel very happy and confident that we picked up and we team up with the right team that has the spark for cricket and connecting with the community and youth and the game. So टोरंटो नेशनल की एक और चीज़ मुझे पसंद आई कि ये भी यहाँ पर यूथ कैंप्स लगाए हैं इन्होंने. दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू टैलेंट्स. तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट डिज़ाइन होता है, यानी कि आर मोटो इज़ टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी. एनी प्रोजेक्ट, एनी इवेंट दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स कम्युनिटी is where you will find us. So this is the company motto that we follow. Now टोरंटो नेशनल्स के मैंने कुछ मैचेस देखे, और मैंने इनको कहा था कि अगर टीम फाइनल में आएगी तो फिर then I'll be back here. And I am glad that I was there. I shared the moment. I saw the winning spirit. कुछ चीज़ें जैसे बारिश हो रही थी, बारिश होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा बारिश थी, ऑब्वियसली ग्राउंड स्लो थे, ग्राउंड को ड्राई होने में बड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से गेम देर से शुरू हुआ. और ओवरऑल मैंने ये भी देखा कि जो पिच थी वो बैटिंग पिच नहीं थी, वो बॉलिंग पिच समहाउ बनी हुई थी. और थ्रू आउट द गेम पिच, वेदर, टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से पिच अपना मूड भी बदल रही थी. सो जो गेम का रिदम था, जो गेम की इंटेंसिटी थी, वो बड़ी ऊपर नीचे होती हुई दिखी. बट थैंकफुली द टीम वी वर सपोर्टिंग, द टीम वी आर पार्ट विद, basically they are the national champion. Now being national champion, Touseef and Luqman, being the national champion, when I say meaning T20 GT20 का championship आपके पास है, so now you have double responsibility. Next year not only that you are a defending champion, but लोगों की expectation आपकी टीम के साथ वही है जो इस दफ़ा देखी गई. तो फिर then selection of the boys, यानी कि cricketers, players, उनकी टीम कोऑर्डिनेशन, एक बहुत एक इंटेंस किस्म की सपोर्ट चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, टीम के साथ प्रैक्टिस चाहिए. ये सब कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द स्कोप, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज़ द डिमांड. बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये देखा कि वेल फाइनल था तो लोग रिलेटिवली ज़्यादा थे वर्सेस ऑल अदर मैचेस एज आई सी एंड एज आई हियर. और उसका फैक्टर ये है कि यूएस कनाडा के अंदर बिजनेस डेज के अंदर पीपल वर्क. सो अगर डे टाइम का मैच होगा तो मुझ तक भी ये बात आई कि बहुत सारे मैचेस के अंदर इतनी पार्टिसिपेशन लोगों की नज़र नहीं आई. मेरा कहना यह है कि अगर वीक डेज के अंदर मैचेस हैं, जो कि करने पड़ेंगे, वरना प्लेयर्स का स्केजुअल, टीम का स्केजुअल, टाइम लाइन, आईसीसी की जो सैंक्शनिंग है, और इनफैक्ट यहाँ की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, कॉस्ट है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि सिर्फ वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैचेस हो. सो वीक डेज के अंदर मैचेस होने के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. नाइट टाइम में मैचेस हो नहीं सकते यहाँ पर इस स्केल पर, मे बी एट दिस पॉइंट, बिकॉज मे बी इट्स जस्ट एट एन इनफेंसी टाइम लाइन राइट नाउ, कि रात के मैचेस के लिए लाइट्स लगाते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अलग फैक्टर है, तो इस वजह से हो नहीं सकता. तो डे टाइम, फिर वेदर पर्सपेक्टिव, वेदर कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोगों की पार्टिसिपेशन भी डिपेंड करती है. और ऑब्वियसली जो कोई भी टीम, कोई भी टूर्नामेंट बगैर स्पॉन्सर्स के और सपोर्टर्स के हो नहीं सकता. तो अगर इन्वॉल्वमेंट अभी इतनी नहीं दिखती तो इन टाइम्स टू कम इट शुड. बट लीग को इटसेल्फ बहुत काम करना पड़ेगा, और टीम ओनर्स को, फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी अपनी कैपेसिटी में डिलीवरेंस देनी होगी. टोरंटो नेशनल की टीम इस वक्त हाई स्पिरिट में थी. कॉलिन मनरो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ कोर्स. हमें एज अ कराची किंग भी उसके साथ एक एक्सपीरियंस है. इज़ अ ग्रेट गाय, एब्सोल्युटली एन अमेजिंग प्लेयर्स. बाकी लोग भी अच्छे हैं, बट मैं इन पर्टिकुलर, हमारा चूँकि एज अ कराची किंग उनके साथ एक राब्ता रहा, वास्ता रहा, तो दिस इज़ हाउ आई सी हिम.
और उसकी लीडरशिप के अंदर, उसकी कैप्टनसी के अंदर ऑब्वियसली टोरंटो नेशनल वन द ट्रॉफी. सो ये एक माइलस्टोन है फॉर द टाइम्स अहेड. नाउ एक चीज़ कहने की है कि हर साल, ये पिछले 3-4 सालों से, 4 सालों से हो रहा है बेसिकली, और एक टेम्पररी सेटअप जो यहाँ का एक फैक्टर भी है, एक फैशन भी है और सेटअप स्टाइल भी है. टेम्पररी सेटअप लगाते हैं हर साल. मुझे ये समझ नहीं आती कि लीग वाले प्रोविंस के साथ मिलकर या स्टेट के साथ मिलकर इन रिस्पेक्टिवली कोई ऐसी अरेंजमेंट क्यों नहीं करते कि ये वो जगह ही लीज कर लें. तो जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर की तरफ जाए और परमानेंट होता हुआ नजर आए, ताकि एक अगर स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम अगर होगा किसी भी एरिया में, तो वो एक मोटिवेशन होगी लोकल उन क्रिकेटर्स को भी, यंग क्रिकेटर्स को भी, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को भी, कि वो वहां जाकर खेले, देखेंगे एज इट इज दे विल कनेक्ट. यहां पर एज इट इज यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूं, ऑफ कोर्स ओवरसीज एज वेल, बट दिस इज वेयर वी लिव इन अमेरिका, इन न्यूयॉर्क आई लिव. मैं देखता हूं कि क्रिकेट एक वन ऑफ द मोस्ट हार्ट फेवरेट स्पोर्ट्स है फॉर दोस्त ऑफ साउथ एशियन डिसेंट. यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली ज़रूरत है. तो बाकायदा ये सारे लीग ओनर्स जो डिफरेंट क्लब्स चला रहे हैं, या इस तरह के GT20 या पाकिस्तान, यूएस के अंदर भी हैं, पाकिस्तानी इंडियन जो भी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है, वो दे टीम अप एंड दे गो टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट. प्लानिंग मैं सुन रहा हूँ कि प्लानिंग है, नेक्स्ट ईयर बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, 5 साल बाद बनेगा, मगर 4 साल से तो ये सब इस तरह की लीग्स हो रही हैं और अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं आया. परमानेंट होगा तो इसकी एक तो हर साल कराने की कॉस्ट वैसे भी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो दिस इज इवन बेटर. यानी कि अगर इन 3-4 सालों के अंदर जो भी कॉस्ट इन्होंने टेम्परेरी सेटअप में लगाया है वो अगर परमानेंट सेटअप की तरफ जाता, तो कलेक्टिवली और भी बाकी अगर लीग्स काम कर रही हैं इस पर, तो एक बेहतरीन सेटअप किसी भी प्रोविंस और किसी भी स्टेट में इस तरह से भी बनाया जा सकता है. जैसे मैंने कहा कि इस दफ़ा की चैम्पियनशिप जीतने के बाद टोरंटो नेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है, कनेक्टिंग विद द फैंस, फाइंडिंग न्यू एंड स्ट्रॉन्ग टीम. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को पीसीबी से एनओसी नहीं मिली, लेकिन ये सब लास्ट मिनट चल रहा था. अच्छा, हम लोग भी इन्वॉल्व थे, तो मैं भी यहाँ के लुकमान एंड तौसीफ के साथ आई वाज इन टच. लास्ट मिनट 1 हफ्ते तक पता नहीं था कि आ रहे हैं. शाहीन आफरीदी, बाबर आजम की भी रिक्वेस्ट गई हुई थी इस तरह कि ये लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे. तो इस पर मेरी सजेशन ये है कि ये लीग का काम है कि ये पहले से ये वाले फैक्टर्स को एड्रेस करके रखें, जाएं लोगों तक जो अथॉरिटीज़ हैं, पीसीबी हो, बीसीसीआई हो. खैर बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का क्या कहना, वो तो करंट प्लेयर्स को, जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं, उनको परमिशन ही नहीं देते कहीं बाहर खेलने की. और उनका एक और भी बार है कि आफ्टर दे अनाउंस रिटायरमेंट, वो एक कूल ऑफ पीरियड है बेसिकली, 2 साल का है, 3 साल का, आई थिंक इट्स 2 years, कि उसके बाद यानी कि दे वांट टू मेक श्योर कि वो प्लेयर रिटायर हो चुका है, फुली रिटायर हो चुका है. एनीवेज हमारा बोर्ड अलाउ करता है, परमिशन देता है, पाकिस्तान बोर्ड की बात कर रहा हूँ. तो इनके साथ लीग वाले पहले से कोऑर्डिनेशन रखें ताकि सर्टेनिटी हो. होता ये कि पहले से नाम आप ऐड कर देते हैं और बाद में अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से उस प्लेयर्स का इंडक्शन नहीं होता, तो फिर फैंस को डिसअपॉइंटमेंट होती है. ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स और मीडिया पार्टनर्स सबको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई हमने तो इस वजह से साइन अप किया था कि वो आ रहे हैं, XYZ प्लेयर्स आ रहे हैं. तो इस मैटर को बहुत क्रिटिकली देखना होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग अहेड ऑफ द टाइम करना होगा. लुकमान एंड तौसीफ, एक दफ़ा फिर थैंक यू वेरी मच दैट यू ब्रॉट हैप्पीनेस टू अस एज वेल एंड टू द पीपल ऑफ टोरंटो एंड टू द पीपल, टू ऑल द क्रिकेट लवर्स, कि you have the championship, you have won the championship, you maintain it and make sure you deliver the best next year as well. Over to you, Ahmed. थैंक यू आसिफ भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बिल्कुल ये सवाल जो आपने पूछे हैं ना, इनका जवाब लेते हैं हम लुकमान से और तौसीफ से. तो ARY being a part of Toronto Nationals, not this year but the last year, how did it started? Yeah, I mean last year you know we got into this franchise I think just 2 weeks ago. I think उससे almost 1 week पहले टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आसिफ भाई आए हुए थे. Somebody introduced us to आसिफ भाई. This was actually first time meeting him
And then I think we have a same passion of cricket, and then ARY being one of the biggest channel in Pakistan and also in North America, South Asian channel. So we wanted to partner up, and then we really appreciate their support. जब आपने passion की बात की, ARY is one of the owners for the Karachi King as well, for PSL as well. Right. And definitely we share the same passion. Yes. And Asif Jumal is doing a great job bringing people together, bringing cricket together. Yes. तो जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ sponsors की और brands की हम बात करते हैं, now since you guys are champions, right, and I'm assuming a lot of brands want to come, being part of Toronto Nationals, but जब 1-2 महीने का आपको एक रनवे मिलता है कि यार अब हम लीग स्टार्ट करने लगे हैं, वापस अनाउंसमेंट हो रही है, how difficult it is, to get sponsors on board and leaving out the marquee players. अच्छा, उसमें जो है वो बिल्डअप होता है, राइट? नो स्पॉन्सर जस्ट कम्स इन just want to throw in the money. What they're evaluating is, was their value back or return back or ROI, right? So this is where we have to sell them on. जो हमारे कुछ पिछले सीजन हुए हैं, ये काफ़ी लेट अनाउंस हुए हैं, उसकी वजह से we couldn't sort of sell it to them. लेकिन इस साल you will see sanctions start coming in within this year for next year. That will help us. Big companies जो पहले स्पॉन्सर करना चाहती थी, टाइम की वजह से नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस साल और जो अगले साल सीजन हमारा आ रहा है, you will see some big names coming into GT20. That's good. That's the passion we're all looking to see. And that's very important, right? Passion. We want to not only you want to partner with the sponsors that share the same passion like ARY. They need to value our core values. It's not ARY is really helpful in that sense. So we want to bring in the sponsors that are aligned with our goal. क्योंकि आपके मेरे दरमियान में ये ट्रॉफी आ रही है ना, जी, तो इसी से ट्रॉफी के सवाल आपसे पूछते हैं. जी, प्लेयर्स, राइट, इंटीग्रल पार्ट है टीम के अंदर, राइट? जी. You being an owner, sitting at the booth, talking to the CEOs, talking to the captains, right? एक ही चीज़ भी होती है कि मेरा मैसेज प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्लेयर वो फील करेंगे वो इस तरीके से कि वो परफॉर्मेंस दें ग्राउंड के अंदर. Were you able to getting chance to talk to the players individually or talking to them, mobilizing them that we have to win because every team needs this motivation? बिल्कुल. I think during the game तो नहीं हम कैप्टन से बात कर सकते. It's ICC under their rules. लेकिन यह है कि before when you pick the team, you gotta make sure that the coach that you pick and the CEO they also align with what you're trying to do. उससे बहुत आसानी हो जाती है. कि उसकी वजह यह है कि when you share the common goal, then you can work towards that spearhead. So that's something when we were discussing picking our CEO, we wanted to make sure that who aligns with that. और इसी तरह फिर जब कैप्टन भी आता है, you align that. And then you talk to them before the tournament and they say, this is what we are about. This is what our brand needs to look like. Then you let them do their professional stuff on the field. That's where you have to trust that process and let them do what they need to do. And this is the result of it. Yeah, so I think touching on your question, I just had one expectation. Excuse me, coming in, playing cricket myself, just effort and energy. We can't control the results. आपने अपनी effort दिखानी है. That was the entire expectation. And I told them, जो हमारी पहली meeting हुई थी, कि win or lose is part of the game. We just gotta go in full effort, full energy रहने चाहिए कि Toronto National की team खेल रही है. ठीक है. Since now you guys are champion, right? तो खुल कर डिस्कस करते हैं कि what improvements do you think that need to bring from the GT20 itself? देखिए, इम्प्रूवमेंट काफ़ी हैं. द वन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ मार्केटिंग. आई थिंक काफ़ी लोग हैं. अब आप फनल में आए थे, देखा था कितने लोग थे, कितना एंजॉय कर रहे थे. इट्स जस्ट अवेयरनेस नहीं है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लोग हैं, एक स्केजूल है, टाइट स्केजूल है. दे नीड टू नो द टाइमिंग्स ऑफ द गेम्स, व्हाट डे और हाउ लॉन्ग इज दिस लीग. सो उस लिहाज से थोड़ा मार्केटिंग का जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. फिर आपने हमारे पिच की बात की. पिच इज़ अ की पार्ट टू एनी टूर्नामेंट. वी वांट टू हैव हाई स्कोरिंग गेम्स, entertaining games, and also expand. GTA it's a very big market. Also, Vancouver में जो है league plan कर रही है, maybe next year or the following year, we want to have half of the tournament in Vancouver and then move the other half. लेकिन हर साल एक uncertainty होती है
कि GT20 होगा कि नहीं होगा, और 2 महीने पहले ही पता चलता है, एंड दैट्स वेयर द लैक ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स, बिकॉज 2 महीने में आपको रनवे इतना नहीं होता कि आप उसको टारगेट्स अचीव कर सकें. ग्राउंड की हम अगर बात करें इसके साथ, तो एक ग्राउंड है जो कि ICC अप्रूव्ड है, जिसको CAA सेंटर भी कहा जाता है जी. और काफ़ी अर्से से बात हो रही है कि चलो ग्राउंड अगर ये भी है तो सिर्फ लाइट्स लग जाएं. ये लास्ट में मैंने आपसे बात की थी. एंड देयर आर ग्राउंड्स हियर इन नाइग्रा, हियर इन मेविस, इन मिसिसागा, डिफरेंट एरियाज, ब्रैम्पटन में, जहाँ पे लाइट्स के अंदर मैचेस होते हैं और डिफरेंट लीग्स जो BDCL, MPL, MCL, ये सारे लीग मैचेस होते हैं वहाँ पे. तो डू यू थिंक कि ब्रिंगिंग लाइट्स टू दैट ग्राउंड, आई मीन इवन दो कि अभी स्टेडियम बिल्ड होने की बात हो रही है, बट ब्रिंगिंग लाइट्स टू दैट ग्राउंड विल bring more people to the ground? Why? Because the matches will start happening in evening. अभी डे टाइम में 11 बजे मैच कराएंगे तो सब लोग जॉब छोड़ कर नहीं आएंगे मैच देखने के लिए. ठीक है, that's where you lose a lot of revenue from your ticket. I think उसमें ये कि जो 11 o'clock game है, there is a lot of media rights that needs to happen. तो वो that's the majority for back home, India, Pakistan के लोगों के लिए. The 4 p.m. game should technically be around 7 p.m. उसमें ये कि you need lights. उसका infrastructure is not there yet, लेकिन the stadium will start to build next year, and there's other options that they're exploring. So hopefully moving forward we'll have night games. और उसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि then people will start coming, and I think we'll have a bigger crowd. There's an appetite for sports in North America, and we are a sports country, right? So hopefully with passage of time things will pick up and get better. Luqman, I don't know if you know, of course you'll know, because GT20 didn't get the proper funding this year as well, right? Right. क्या रीज़न है इसकी? क्योंकि अगर हम देखें बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं. इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द वेरी बिग टूर्नामेंट ओलंपिक्स जो कि होने जा रहा है इस दफ़ा कनाडा में, अमेरिका के अंदर, $104 million की ग्रांट उसको दी है. और जो क्रिकेट, जो कि क्रिकेटिंग मैं कह सकता हूँ कि देखें आप, क्योंकि क्रिकेट कनाडा इस्टेब्लिश हो गया है. क्रिकेट कनाडा हैज प्लेड वर्ल्ड कप जस्ट दिस ईयर, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग, एंड अ लॉट ऑफ मल्टीकल्चरल पीपल दे लाइक दिस गेम. उसके बावजूद ना अप्रूवल मिलना फंड्स की, दैट्स losing a lack of interest in the cricket. Right. No, you're absolutely right. I mean, look, there's one thing that's very clear that everybody knows, including all the politicians or all the big companies, that cricket has a very bright future in this part of the world. Yeah. Okay? I think it's more of a how early are you approaching them and what your approach is. I think that needs to be improved. Right message needs to be sent across. I think we lacked this year, which we're expecting it will improve next year. But I don't know if you have seen the ad or not. BMO is running ad of Rohit Sharma. Yes, right? I did. So that's huge. Yeah. I mean, that tells you that there's a huge market. There's a huge market here that watches cricket, that's interested in cricket, and that's where these big companies are actually investing. By the way, Rohit Sharma is still playing with IPL. Any games? Yes. I mean, he retired from T20 International, but he's still a full-time player for all of them. Maybe you're bringing him next year, you never know. I mean, we wish, they have to wait 3 years before, after retirement. So why not any Indian player was picked this year from India? So BCCI, well, you can only have retired player, and then even after you make an official retirement announcement, BCCI has a rule of 2-year cool down period. अच्छा, ठंडा करना होता है प्लेयर को, खेल ही ना सके. I mean, look, any player that has a whole following or a brand associated with it, so they don't want IPL to lose that brand or the fan following. That's the main. And then to answer your question, we don't want, or at least I can speak on behalf of Toronto National. We don't want to bring in any retired players. Right? You said this last time too. Yes. So that's a good approach. I mean, you're working toward the youth and bringing more seasoned players this year. That's right. But anyhow, last year तो गुजर गया, और अब बात करते हैं आने वाला जो साल है, क्या तैयारियां हैं उसकी? कि बस ठंडे हो जाने अब खत्म है तो अगले साल फिर 4 महीने पहले सोचेंगे? नहीं, I think आप you play cricket yourself, और आपको पता है कि if you win something, the next year becomes twice as hard. Because you're going there, आपने एक standard set कर दिया, and people are coming to compete against that winning team. So we will be under the radar. तो इंशाल्लाह तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी. तो hopefully we can sit together on the drawing board and plan out the next year.
Inshallah, and looking forward for more wins for Toronto Nationals, and thank you very much for being part of Being My Guest. जी हाँ, टोरंटो नेशनल्स इस साल की फातेह टीम GT20 की, और पिछले 4 साल से हम देख रहे थे जब से लुकमान और तौसीफ टीम के अंदर आए, और हमने देखा कि कैसे जो है वो टीम ने इस दफ़ा सक्सेस पाई और इस दफ़ा चैम्पियंस हुए. आने वाले साल में उम्मीद करते हैं कि दे गेट अनदर ट्रॉफी एंड कीप ट्रॉफी कमिंग टू टोरंटो नेशनल्स. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा ओनली ऑन ARY न्यूज़.